let's talk about it. I think the screen will be visible. Okay. So, like in a previous session, we have done the concept of foreground, background, as well as we have also discussed the transform mode, okay, as well as the resize we have already discussed. So, the next we are going to talk about the matte painting mode, or basically you can say one frame masking by using a new. Okay. So here you can see, yeah, I have done an exercise. You just wait this.
ओके, आई होप स्क्रीन दिख रहा होगा सभी को, मेरी आवाज़ आ रही होगी। क्या, सॉरी फॉर द इंटरप्शन गाइस, पावर कट हो गया था। सो बेसिकली आज का हमारा सेशन क्या है? आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं रोटो पेंट नोट टूल की। ठीक है, जिसके अंदर हम लोग एक एक्सरसाइज करने वाले हैं जहाँ पे हम लोग इमेजेस को कट करेंगे, मास्क करेंगे और मास्क करके ऐड करके चीज़ों को देखेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक छोटा सा मैप पेंट बनाया हुआ है आपके सामने, और इसके लिए जो मैंने इमेजेस यहाँ पे कुछ यूज़ किए हैं, ओके, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, आप लोग देख सकते हैं। These are the images that I have used, and these are good quality images. Okay, now you can see this. So it's having the dimension of 2K, 3K size. Okay, so it's like just similar to the commercial footage. Okay. So I've taken some good quality image references here. So okay. Right. So by using all these images, what I have built is something like this. Okay, where you can see this is the base image. Okay, जिसके ऊपर मैंने scene को build किया हुआ. Okay, so this is okay. So these are the cut paste that I have done here. Okay. So this is like the car part. You can see this. Okay. This is like the another. This one is like the another building part. Okay. Look at this. So this I have this here, right? So this is like very important. It's a basic exercise to understand the roto or roto paint node inside Nuke, that how exactly it's working. Because we are having a topic in our syllabus that is called rotoscopy and rotoscope. So I hope everyone is aware about the topic that you guys have already done in After Effects. तो इट्स लाइक इससे पहले कि हम लोग सीधे जा करके रोटो करें, हम लोग पहले टूल को समझें, कुछ इस टाइप से एक्सरसाइज करें, एंड दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। वेल लेट मी क्लियर यू, जो पाइपलाइन है, इंडस्ट्री पाइपलाइन है, उसमें हम लोग जो मैट पेंट है वो कहीं ना कहीं फोटोशॉप में ही करते हैं। ठीक है, तो मैं उसके अगेंस्ट में नहीं हूँ, बिल्कुल लेयर बेस्ड चीज़ों को हम लोग क्रिएट करते हैं। बट अभी के टाइम में इट्स लाइक वी ऑल ऑफ यू नो कि हम लोग हाई रेजोल्यूशन फुटेजेस यूज कर रहे हैं फॉर सिनेमा एंड फिल्म। सो इट इज़ लाइक अप टू द साइज ऑफ 4K और 8K। ओके, तो वहाँ पे जब हम लोग इमेजेस मैनिपुलेशन की बात आती है कंपोस्टिंग में, तो लाइक बहुत कुछ चीज़ें हम लोग, अगर हमारा प्लेटफॉर्म जो है पाइपलाइन में अगर न्यूक है, तो हम काफ़ी कुछ यहाँ पे ही कर लेते हैं, हमें फिर फोटोशॉप की वैसे एज सच कोई रिक्वायरमेंट होती नहीं। हाँ, बट व्हाट आई एम सेइंग इज कि जो पाइपलाइन है वो फोटोशॉप का ही है, तो मैं उसके अगेंस्ट में नहीं हूँ। तो जब हम लोग प्रॉपर मैट पेंट की बात करेंगे तो डेफिनेटली हम लोग फोटोशॉप की भी बात करेंगे। तो यहाँ पे ये वाला एक्सरसाइज हम लोग करेंगे जिसके थ्रू हम लोग रोटो पेंट नोड जो है, जो टूल है, उसको हम लोग समझने की यहाँ पे कोशिश करेंगे कि किस तरीके से चीज़ें काम करती हैं। सो लाइक मास्किंग का जब भी आपको ख्याल आए न्यूक के अंदर की चीज़ों को मास्क करना है, तो आपके पास जो टूल अवेलेबल है उसको हम लोग यहाँ पे, उस टूल को हम लोग दो नाम से जानते हैं। हियर यू कैन सी one is called roto and another is one called roto paint. So first we need to understand what is the difference between roto and roto paint, then we'll talk about the exercise कि कैसे इसको करना है हम लोग को, ठीक है? So for that I'll take this separate footage for this. Okay, I'll take a separate view. So here I'm having this image, right? Okay. Now अभी यहाँ पे कुछ ऐसा है कि हमें मास्क करना है एक छोटे से पार्ट को, हम लोग फॉर एग्जांपल यहाँ पे मास्क करना चाहते हैं, कट करना चाहते हैं, ये हमारी रिक्वायरमेंट है, बहुत सिंपल सी बात है। तो उसके लिए आपके पास ये दोनों ऑप्शन है, लाइक मैं यहाँ पे रोटो नोड को भी ले रहा हूँ, ठीक है, और मैं साथ ही पैरेलल रोटो पेंट नोड को भी ले रहा हूँ।
so that we can differentiate कि क्या है क्या नहीं, ठीक है। Select here you can see जब मैं रोटो को सिलेक्ट करता हूँ, रोटो नोड को, और जब मैं रोटो पेंट नोड को सिलेक्ट करता हूँ, तो आप यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में कुछ ऑप्शंस हाईलाइट हो रहे हैं, उनको आप जरा यहाँ पे ध्यान दें। जैसे रोटो के केस में क्या है, रोटो नोड के केस में यहाँ पे आपको 3 कॉलम ऐसे टूल्स के दिख रहे होंगे, ठीक है। ओके, this is your basically the paint tool or the selection tools, okay, where we have simple select option, as well as here we have some few more tools like base the other, right? Similarly, if you select the roto paint tool, now you can see we have something extra, okay. Here we have something called brush, eraser, some clone option is also there, okay. Some blur, sharpen, speed option is also there. So the first difference what we can calculate, हम लोग क्या पहला difference calculate कर सकते हैं कि रोटो पेंट में कुछ तो extra है as compared to the रोटो। सो दैट मीन्स कि यहाँ पे बहुत सिंपल साफ शब्दों में मैं बोलना चाहूँगा कि जब आपका कंसर्न सिर्फ मास्किंग से है कि आपको चीज़ों को मास्क करना है, well in that case roto node is sufficient, right? बट अगर आपका कुछ कंसर्न ऐसा है कि आपको मास्क के साथ पेंट भी करना है, पेंट करने से मेरा मतलब है जैसे आपको क्लीन प्लेट बनाना है, तो आई होप कि यहाँ पे सभी लोग वर्ड समझते होंगे what I mean to say by the word using called clean plate. Well, any one of you can explain it to me what exactly the clean plate is? क्या कभी हमने इससे पहले इसका नाम सुना है क्या, क्लीन प्लेट का? ओके, यहाँ पे क्या डिस्कशन कर चल रहा है, किसको समझ में आया इंस्टॉल कैसे करना है न्यू? ओके, ओके, लाइक इसमें से कितने लोग हैं जिन्होंने अभी तक इंस्टॉल नहीं किया? कितने लोग हैं? जस्ट पुट योर हैंड, पुट द मैसेज इन द टेक्स्ट बॉक्स। कितने लोग हैं जिनका इंस्टॉल नहीं हुआ अभी तक? हे गाइस, आवाज आ रही है आप सभी को मेरी? मेरा सर, ओके। आकाश का नहीं हुआ, अंकित का नहीं हुआ, ओके। और कोई? सत्यम का भी नहीं हुआ, इतने सारे लोगों का नहीं हुआ है, ओके। विनायक शर्मा, ओके ओके। हितेश, मेरा चल रहा है सर बैकग्राउंड में, ओके। नो नो, आई एम नॉट आस्किंग किसका बैकग्राउंड में चल रहा है, मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि कितने लोगों को इंस्टॉल करने में तकलीफ आ रही है, और क्या तकलीफ आ रही है? जस्ट अनम्यूट योरसेल्फ एंड टेल मी गाइस, किसको क्या प्रॉब्लम आ रहा है, जस्ट क्विकली। हम्म हम्म। ओके ओके, और कोई है यहाँ पे? और कोई है जिसको नहीं समझ में आ रहा? ओके, और कितने लोग हैं जिनका इंस्टॉल नहीं हुआ? जस्ट अनम्यूट योरसेल्फ एंड क्विकली रिस्पॉन्ड मी, क्या प्रॉब्लम आ रहा है? गाइस आप बोल सकते हैं, सिर्फ यहाँ पे आकाश था जिसका इंस्टॉल नहीं हुआ, बाकी सभी का इंस्टॉल हो गया है। तो फिर वो लोग हमें बता दें कि भाई कैसे क्या करना है। सर इंस्टॉल करने के लिए एक बार सर्वर को स्टॉप करना विशाल पड़ता है। विशाल वेट विशाल वेट 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 विशाल, माय क्वेश्चन इज जिनका नहीं हुआ है पहले वो मुझे रिप्लाई करेंगे, किनका नहीं हुआ। क्रैक इशू है सर बस, ओके। संचित, कैन यू अनम्यूट योरसेल्फ? संचित, आप अनम्यूट करके ये बात बोल सकते हो क्या? आवाज आ रही है सर? यस यस संचित, यस। यस सर। आपको क्रैक में इशू आ रहा है? यस सर। ठीक है। तो बाकी देखिए, मैं एक ग्रुप में एक यूट्यूब का एक वीडियो आप लोग को शेयर करूंगा, ठीक है, जिसके अंदर आपको इंस्टॉलेशन गाइड दिया हुआ है, ठीक है। एंड आई थिंक इट्स इनसफिशिएंट, आप उसको 10 मिनट अच्छे से देख लोगे तो आप समझ जाओगे। अभी मैं यहाँ पे ये प्रोसेस करके बताऊँ इसका कोई सेंस नहीं है, तो जस्ट कुछ स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं, तो उसके सर्वर को रन करना और चीज़ों को ब्लॉक करना, स्टॉप करना, और फिर आपका न्यू क्रैक हो जाएगा। I understand, I do understand. Crack करना is not easy, but it's having several steps. I'll share you the link of YouTube where you guys will just go follow it and crack it. Okay? अगर उसके बाद भी किसी को प्रॉब्लम रह जाता है, then please let me know. ठीक है? Okay. Okay. So what my question is, what I'm asking is, it's like about clean plate. Okay. So did, like anyone is having any idea what the clean plate? What exactly clean plate is? कोई मुझे बताएगा क्या?
इमेज से अनवांटेड ऑब्जेक्ट को गायब करना कैसे? जादू की छड़ी घुमा के तुषार कैसे गायब करेंगे? तुषार, कंटेंट अवेयर को यूज करके दैट यू कैन फाइंड इनसाइड फोटोशॉप। कंटेंट अवेयर और कहाँ मिलता है? स्पॉट हील, फोटोशॉप, और कहाँ मिलता है? ओके, ठीक है, ठीक है, ठीक है, इट्स अ गुड आंसर। लाइक आप आपके फुटेज प्लेट के अंदर कोई भी ऐसा सीन है जो सीन में रिक्वायर्ड नहीं है, दैट इज कॉल्ड अनवांटेड डेफिनेटली। तो उसको वहां से हटाना, और जो चीज आप लेकर के आ रहे हो दैट विल बी टेकन एज द क्लीन प्लेट, दैट्स गुड। तो वही चीज यहाँ पे हमें वीएफएक्स में ये बहुत ही कॉमन वर्ड है, आप ठीक है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पता होना चाहिए। तो लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ से जैसे मुझे इस इमेज के अंदर से ये पोल नहीं चाहिए, या ये फिर ये डस्टबिन बॉक्स नहीं चाहिए फॉर एग्जांपल, तो इसको कैसे हटाएंगे? डेफिनेटली क्लोन करके ही हटाएंगे। ओके, तो दैट इज व्हाट आई एम टेलिंग कि जो रोटो पेंट नोड है, ठीक है, उसमें ऐसा है कि आपके पास पेंट की फैसिलिटी भी है, ब्रश की भी फैसिलिटी है। तो लाइक और इसके अंदर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे राइट हैंड साइड में अगर आप इसकी प्रॉपर्टीज में आओगे तो आप देखोगे कि यहाँ पे हमारे पास लेयर के भी ऑप्शंस मिलते हैं। यू कैन सी यू कैन क्रिएट द मल्टीपल लेयर्स, ओके, एंड इनसाइड द मल्टीपल लेयर्स you can store the different information, either it could be the information of masking or some cloning, या जो कुछ भी आपने पेंट किया हुआ है आप उसकी इंफॉर्मेशन को यहाँ पे कैरी करके रख सकते हो सेपरेटली, लेयर वाइजली, राइट। सो दीज आर बेसिकली, तो यहाँ पे जो पेंट वाली फैसिलिटी है ना वो आपको रोटो पेंट के अंदर मिलती है। और अगर आप सिंपल रोटो नोट की बात करो ना तो फिर वहाँ पे पेंट की फैसिलिटी नहीं मिलती है, वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मास्किंग की फैसिलिटी मिलती है। सो रोटो पेंट इज समथिंग व्हिच इज कमिंग विद द फीचर ऑफ मास्किंग प्लस पेंट, okay, whereas if we talk about the simple roto node, that will only offers you the masking feature. So I hope it will be clear to all of you, this is the basic difference. Rest जब हम लोग इसको ऑपरेट करेंगे, दोनों टूल को यूज करेंगे, तो हम लोग इसके फीचर्स को और अच्छे से समझ पाएंगे। तो आज जो हम लोग बात करने वाले हैं वो सिर्फ और सिर्फ मास्किंग की बात करने वाले हैं। तो उसके लिए आई गोना यूज समथिंग कॉल्ड रोटो नोड, ओके। तो इट्स लाइक आई सेलेक्ट दिस रोटो नोड, और फिर यहाँ पे हम लोग आते हैं और यहाँ पे देखिए हमारे पास अलग अलग से टूल्स हैं जिसको हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। वी हैव समथिंग कॉल्ड बेजियर, सो आई विल सेलेक्ट दिस बेजियर टूल, ठीक है, एंड आई विल स्टार्ट मास्किंग। लाइक जो भी आपको मास्क करना है, यू जस्ट आई जस्ट स्टार्ट मास्किंग हियर, यू कैन सी यू कैन मेक इट ज़ूम, एंड लाइक बेजियर के साथ ये प्लस पॉइंट है। आप लोगों ने इससे पहले अगर कहीं पे भी बेजियर करके टूल पढ़ा होगा तो आपको आइडिया होगा कि इसके अंदर दोनों फीचर आते हैं। दैट मीन्स कि आपको लीनियर स्टाइल में जब चीज़ों को ड्रॉ करना है सीधा सीधा तो भी आप कर सकते हो, और जब आपको ज़रूरत होती है चीज़ों को कर्व करने की, फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ पे चीज़ को कर्व करना है तो मैं इसके टेंजेंट्स को इस टाइप से ट्रैक करके कर्व बना सकता हूँ। सो दैट इज लाइक बेजियर इज समथिंग मल्टीपर्पस टूल, जहाँ पे आप कर्व को बिल्कुल कस्टमाइज तरीके से मैनेज कर सकते हो, और जब आपको सीधा ड्रॉ करना है तो आप सीधा ड्रॉ करते हो, और जब आपको कर्व चाहिए होता है तो आप कर्व ड्रॉ करते हो। एंड ट्रस्ट मी, अभी तक जिन लोगों ने यूज नहीं किया होगा आप एक बार यूज करके देखो, आपको काफी मजा आने वाला है। अभी तक आपने जहाँ कहीं पे भी पेंट टूल या बाकी टूल्स यूज किए होंगे उसकी कंपेरेटिवली ये काफी स्मूथ है, ओके, और काफी इजी है, मतलब काफी यूजर फ्रेंडली है, आपको बिल्कुल परेशान नहीं करेगा, और इसलिए आप अपने सिलेक्शन के कर्व्स को, एजेस को फॉलो करने में कंफर्टेबल फील करोगे, ओके। सो यू कैन see this, look at this. So I just quickly select this one, okay, something this. So where exactly I want to create curve, I can create by using the handles or tangents. When you want something linear, you just put the 2 points and you'll get the straight line, okay. So I'll close it, okay. So now you can see it has been perfectly selected, okay. Now next how to extract this selection from the image. So here we can see, here we have the viewer and this is the image, okay. So just put your roto paint just after this image, okay, and you can see after putting this paint node nothing is going to be happen here, यहाँ पे कुछ भी जादू नहीं होने वाला, ठीक है।
until or unless जब तक से हम लोग कुछ चीजें फिक्स नहीं करते. So select your roto paint, come this side, and here you need to fix two things. Like one is called output, and another one is called pre-multiply option. Okay, so in this output you can see this is like already selected as alpha, and in this pre-multiplication I'm gonna put something called RGB. Okay, and now you can see it has been extracted. Okay, so now it has been extracted. Like किसी को कोई doubt है तो I'll change the BG also. Like I'll put a new BG behind this. Okay, so now you can see it has been extracted. So it's like just hold down guys. Okay, sorry for the interruption. Let's continue. So now here you can see this
object has been extracted once they put this roto paint here. Okay, so for the next, like for the background, let's take I'll take a constant. I hope everyone is aware about the constant. Constant is like, you guys can compare this constant, something you are taking a solid in After Effect. Okay, so this is something like a constant in new. Okay, so let's change the color here. Okay, so yeah, let's take a merge node. Okay, to place this. It's like this one will be the background. This constant will be the background. This object will be the foreground, and here we have the viewer. So now you can see your object has been extracted completely here. Okay, the rest, the size option will be there, as well as the reformat is required. Okay, so now you can see. Okay, the next is like, आप जब प्रोटोपेंट यूज करोगे ना गाइस, तो इस टाइप से आपको चीजें यहाँ पे दिखाएगा, पॉइंट्स दिखाएंगे, इसके लाइन आएगी। जैसे ये बाय डिफॉल्ट रेड कलर की आती है, मैंने रेड कलर का कॉन्स्टेंट यूज किया तो शायद आपको नहीं दिख रहा हो। लेट मी चेंज द कलर। सो यू कैन सी यहाँ पे आपको रेड कलर का ऐसे लाइन दिख रहा होगा सिलेक्शन की। सो समटाइम्स दिस इज डिस्टर्बिंग, जब आपको एग्जैक्ट देखना होता है कि भाई एग्जैक्ट क्या पिक्सल एग्जिस्ट कर रहा है हमारी एजेस पे, तो उस टाइप की ये लाइन होता है और हम चीज़ों को ठीक तरीके से देख नहीं पाते हैं। तो यू कैन यूज सम ऑप्शंस हियर, लाइक आप व्यू कोड पे यहाँ पे लिखोगे टॉप साइड में, लेफ्ट साइड में, तो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आपको दिखेंगे। So these are for this lines, like I just want to hide this or unhide this. तो ये जो मास्क वाली लाइन है, आई होप यहाँ पे सबको दिख रहा होगा। ये मास्क वाली जो लाइन है, इसको आपको हाइड एंड हाइड करना है, ठीक है। सिमिलरली पॉइंट्स हैं, वर्टेक्स हैं, उनको हाइड एंड हाइड करना है। ओके, सो लाइक यू कैन सी यहाँ पे ये जो वर्टेक्स आपको दिख रहे होंगे, सो यू कैन जस्ट मेक इट हाइड और अनहाइड। ओके, समथिंग लाइक दिस। ओके, सो एग्जैक्टली यू कैन सी कि क्या यहाँ पे सिनेरियो है, ठीक है। यहाँ पे येलो कलर में आपको वर्टेक्स दिख रहे हैं, यू कैन सी दिस। तो यहाँ पे ब्लैक कलर में आपको ज़्यादा इजी दिखेगा, यू कैन सी दिस। ये जो हमारे वर्टेक्स हैं, ठीक है, हमारे सिलेक्शंस के ऊपर, लाइक यू वांट टू मेक दिस, लाइक यू कैन सी, यू कैन हाइड और यू कैन अनहाइड। सो दिस इज लाइक वी रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ मास्किंग, यू नो, हमें एग्जैक्टली अपनी एजेस को देखने होते हैं कि कहाँ से हम लोगों ने सिलेक्शन लाइन को लिया हुआ। तो you can just make it enable or disable at any moment to filter your selection. Okay, so this one is this stage is something very important to all of you. Once we have done with the selection, you always need to fix this channel and make sure in the output column this should be always be alpha. Okay, and this will be pre-multiplier of RGB. So this is how it will gives you this result. Sometimes, you know, the people will randomly change the options here, so you just have to understand what exactly you are changing here. Okay, this is very important. For example, let me change the color for this. Okay, so this type, for example, in this output mode, okay, I'll come to this roto mode and I'll come with this output mode. And here in place of alpha, if I'm going to use something called RGBA, so this one, how it display, you can see this will gives you the complete black information in black and white. Okay, if you don't have this background, so this will be in the form of pure black and white. That is what alpha, you can say. So this is very important, that what exactly you are selecting the channels in output and the pre-multiply option. So take care of this option whenever you are putting the selections in this way. Okay, fine. So I just gonna make some selections here. Okay, so I'll take this car image, okay, to make something, you know, bada selection kind of. Okay, यहाँ से इसको बंद करना है, या फिर यू नो, आप जैसे एक और डिफरेंट पार्ट के लिए यू नीड ऑलवेज टू टेक डिफरेंट रोटो पेंट इन इनिशियल स्टेज।
वेल कुछ लोगों को ये भी रहता है कि सर एक रोटो नोड के अंदर मैंने ये वाला सिलेक्ट कर लिया, अब इसके अंदर मैं एक और लेयर बना लेता हूँ, उसमें मैंने दूसरा सिलेक्शन ले लेना, दैट इज ओके। बट इन द इनिशियल स्टेज जब हम शुरू कर रहे होते हैं तो हम लोग अलग अलग चीज़ों को डील करते हैं। तो आप बिल्कुल ऐसे समझो कि भाई हमें ये चीज़ सेलेक्ट करनी थी, तो उसके लिए हमने एक इस टाइप से मास्क हमने यहाँ पे किया। अब दूसरा पार्ट ऐसा है कि भाई मुझे ये कार को सिलेक्ट करना है, एक्सट्रैक्ट करना है, तो उसके लिए मैं एक अलग से यहाँ पे रोटो नोड और ले लूँगा, ठीक है, और फिर से इसको यहाँ पे इस टाइप से कनेक्ट करूँगा। और इस बार हम लोग कुछ और भी बातें यहाँ पे करते हैं, और फिर से स्टार्ट करता हूँ मैं यहाँ पे बीजीएफ के अंदर से। So like you can see, we have some shape options here, like rectangle, ellipse, some direct shape option is also here. Apart from this, like अगर आप सिलेक्शन बना रहे हो तो उसके अंदर आपको पॉइंट्स को ऐड करना है, रिमूव करना है, उनको स्मूथ करना है, उनके हैंडल्स को मैनेज करना है, कर्व को ओपन करना है, ब्रेक करना है, आपको फेदर को मैनेज करना है। जैसे यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो अगर आप इस टायर की बात करो तो आप देखो यहाँ पे शैडो है, तो डेफिनेटली यहाँ पे जो कॉन्टैक्ट शैडो है उसको आप कैसे एक्सट्रैक्ट करोगे अगर आपको बोला जाए कि भाई मास्किंग के थ्रू, बिकॉज दिस इज समथिंग कॉल्ड डिटेलिंग whenever you are doing the process called masking। और स्पेसिफिकली आप ऐसा सोचो कि अगर आप रोटो कर रहे हो, किसी चीज को कट कर रहे हो, कोई कैरेक्टर हो सकता है, कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है जो मोशन में है, तो उस केस में वहाँ पे मोशन ब्लर एग्जिस्ट करेगी डेफिनेटली, और फिर ब्लर होगा तो उसको कैसे कैप्चर करोगे, उसको शार्प लाइन से तो कभी कैप्चर नहीं कर सकते हो। तो बेसिकली मोशन ब्लर जैसी चीजों को कैप्चर करने के लिए रोटो टूल के अंदर फेदर का इन्वेंशन किया गया। So this feather will helps out you to capture the thing called you can say motion blur। Okay, so here we have the feather option also, तो उसके थ्रू आप इस टाइप की चीजें को मैनेज कर सकते हैं। Well, up to this much everyone is clear। किसी को कोई डाउट है यहाँ पे, कोई कुछ पूछना चाहेगा, feel free to put your question guys, any one of you, या फिर मैं आगे बढ़ूँ? क्लियर है सर। My question is to all of you, मैं सबको यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, सभी लोग जुड़े हैं, अगर सभी लोग आंसर करेंगे इट लुक्स नाइस। Okay, thank you so much guys, thank you। Yes, so let's come to mask this one, and for this I will take this once again Roto, and I'll once again go with this bezier, and let's the first selection। Okay, and this is also very important, you know, रोटो के अंदर देखो मैं डायरेक्ट रोटोस्कोपी टॉपिक को पढ़ा था, उससे पहले मैंने ये सेशन को चूज किया है कि हम लोग पहले नीच पे ये सारे काम करके देखेंगे, हाउ टू ड्रॉ द थिंग्स, हाउ टू एक्सट्रैक्ट द मास्क, ये सारी बातें, प्री मल्टीप्लिकेशन करने का क्या सेंस है, इन सब चीज़ों को हम लोग समझेंगे। तो इसका पर्पस ये है कि जब आप ड्रॉ करोगे ना चीज़ को यहाँ पे, तो ट्रस्ट मी यहाँ पे ड्रॉ करने में रोटो जो पूरा प्रोसेस है उसका 50% जो मामला है वो पूरा का पूरा ड्राइंग के ऊपर होता है, राइट। तो ड्रॉ करने की अगर आपकी स्किल अच्छी है ना, समझ लो अगर आप अच्छे से चीज़ों को डिटेक्ट करके ड्रॉ कर सकते हो तो 50% काम तो आपका यहीं ख़त्म हो जाता है। और इस तरह की जब आप एक्सरसाइज करते हो तो आपको टूल के बारे में, उसके ऑप्शंस के बारे में और ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से एक बार क्लियर हो जाती हैं। सो आई जस्ट ऑल्सो कंसीडर दिस कैरेक्टर एज वेल। यहाँ पे कैरेक्टर है, कार के ऊपर बैठा है, तो मैं इसको भी यहाँ से कैरी कर रहा हूँ। ओके, और आप देख सकते हो कि मेरा जो फुटेज है वो फुटेज है मेरा 2K साइज का ऑलमोस्ट। तो जब आप फिल्म की जो हमारे फुटेजेस होते हैं कमर्शियल वाले, जहाँ पे हम लोग VFX बना रहे होते हैं, तो वहाँ पे भी हम लोग को फुटेज ऑलमोस्ट ऑन एन एवरेज इसी साइज़ की चीज़ें मिलती हैं, दी जाती हैं। और बिल्कुल आप सब जूम करते हो ना तो यही सिचुएशन वहाँ पे भी क्रिएट होता है।
तो इसमें बड़ा चूजी होना पड़ेगा आपको, आप कि एग्जैक्टली लाइन ऑफ सिलेक्शन आपको कहाँ रखना है, ओके, सो दैट कोई डिटेलिंग वहाँ से छूटनी नहीं चाहिए या फिर कोई गार्बेज एक्स्ट्रा हमारे मास्क में आना नहीं चाहिए. सो दिस इज लाइक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, so just continue this. This Bezier is really pretty good tool. You know, whenever you want to make like curve, you can do the curve by using the same one. Straight करना है तो straight selection बनाओ. Okay. तो शायद मैं यहाँ पे सिलेक्शन को उतना प्रेफरेंस नहीं दे रहा हूँ, मैं उतना टाइट सिलेक्शन यहाँ पे क्रिएट नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज इसमें भी एक पूरा लेक्चर हो सकता है कि सिलेक्शन लाइन को कहाँ पे रखा जाए. तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग आफ्टर इफेक्ट करके आए हो तो इतना समझ में आता होगा आप लोग को कि किस टाइप से हमें लाइन ऑफ सिलेक्शन रखनी चाहिए. So I'll just okay, this is like the side mirror. So I'll just take some extra pixel here so that we can extract some shadow. Okay, so you can see the selection has been done. And once again, I'll pre-multiply with this RGB, and you can see we have successfully extracted this. Okay, so let's put this car on the parent image that we have taken here, and for that, here you can see. So in this case, like see, first you take the parent image. Okay, here we have the parent image. Okay, this is my viewer, and this is we have extracted this car. You can see this. Okay, and we want to put this on this image here. Okay, so please me visit this road paint. Okay, so how are you supposed to do this? By using the same funda. Once again, I'll take this merge node. ये जो मेरा कार होगा वो फोरग्राउंड में आएगा ए. ओके, और ये जो मेरा पैरेंट इमेज है दिस इज माय बी. ओके, put your b over here. Okay, okay, it's not updating, sometimes this has happened, so you can just take the b once new. Okay, so now you can see this is how it looks like.
the car is somewhere over here. Okay, so you need to fix the right position. Okay, so to do this, once again, we need transform mode. Okay, so that हम अपने ऑब्जेक्ट को शिफ्ट कर सकें. Okay, मेक श्योर कि अब जितनी भी आपके जो कनेक्शन आप बिल्ड करोगे वो आफ्टर रोटो बिल्ड करो. ओके, so this is something like, first connection is your image, second mode is your mask, and third one I'll take something transform node, and I'll click it over here. So here we have the transform, and you can just shift your object where exactly you want, right? So you can just shift it. You want to make it like, rotate, scale, anything. You can make the car chota, bada, whatever. You can do that by using this transform, right? So I'll just try to scale it also. Look at this. Like जहाँ पे भी place करना है आपको scene में. So I'm just intentionally putting this car on this the intersection of this pole because we have extracted this pole also, right? So this is how I'm gonna put this position, right? Okay, fine. So I just want to disable this mask line. Okay, so you can just close it. You can also close this vertex. So this is how it looks like. Check it out. Okay, the next thing, we have masked this pole option. We have also extracted this small light. Okay, this pole. So I just want to put on the front of this, right? So how will you do this? This is also very simple. Okay, here we have already extracted this by using another rotopaint, right? This is how we have already masked this. So let's stick this on the front of this one. Okay, so how you take this? This is what the selection. So take this, okay, somewhere. This is your pole, okay. So I'll make the connection here. This is also very simple. Look at this, okay. For this, we'll take a merge node, okay. और कॉन्सेप्ट को बहुत सिंपल तरीके से समझना है गाइस कि यहाँ पे आप अगर लेयर वाइज सोचोगे तो आप क्या सोचोगे कि भाई ये जो पोल है ना ये सबसे ऊपर आएगा, फिर हमारी कार आएगी, फिर लास्ट में हमारा पेरेंट इमेज आएगा जिसपे हम लोग सीन को बिल्ड कर रहे हैं, है ना. तो बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे भी सोचना आपको, ठीक है. तो अभी आप देख सकते हो कि इस केस में जो अभी तक कनेक्शन हम लोगों ने एस्टेब्लिश किया है उस केस में जो कार है वो फोरग्राउंड में है, ठीक है, और ये जो है वो बैकग्राउंड में, ठीक है. अब नेक्स्ट मर्ज नोड हम लोग यूज करेंगे, ठीक है. तो हमारा व्यूअर शिफ्ट होगा इस तरफ में, और ये जो पूरा सब्जेक्ट अभी तक चलता हुआ आ रहा है ये पूरा सब्जेक्ट हमारा बन जाएगा बैकग्राउंड, राइट, क्योंकि हम इस पोल को चाहते हैं सबसे ऊपर, राइट. सो दिस वन गोज टू ऑन द बैकग्राउंड एंड दिस वन गोज टू बी ऑन द फोर, राइट. और फिर आपका व्यूअर आपको क्या दिखाता है, तो आपका व्यूअर आपको वही चीज दिखाएगा जो आपने बिल्ड किया. लुक एट दिस. सो दिस पोल इज ऑन द टॉप, देन वी हैव द कार एंड देन वी हैव द मेन इमेज, राइट. तो कोई भी कनेक्शन को जब आप इस तरीके से बिल्ड करते हो ना तो आपको इमेजिन करना है कि अगर सोचो लेयर में अगर ये चीज होती तो कैसे होती, ठीक है. उसी तरीके से सोच के इमेजिन करके आपको चेन को अपने बढ़ाते जाना है, ठीक है. तो इसके बाद दो दो मास हो, तीन हो, चार हो, 10 हो, 50 हो. Here I have used 4 to 5 masks to build the scene. Okay, now you can see the concept is going to be same. That is what the merge A and B and the previous connection, like जितने भी हम ऐड करते आ रहे हैं वो सब हमारे बैकग्राउंड्स होंगे, और जो नया ऐड कर रहा हूँ that is always be on the foreground. Okay, तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी मैंने अप्लाई किया, right? I hope it will be clear to all of you. Is it? यहाँ तक का फंडा पूरा क्लियर है क्या सबको? Quickly respond.
Fine, that's good, pretty good. I think all are okay with this. किसी को कोई यहाँ पे issue नहीं. Fine. Then let's talk about like how to extract the shadow kind of things, and like how to manage the curve inside your mask that what you have taken, right? So let's take the example of this roto, this one that is what the car. Okay, so just select this. Okay. Okay. So no, I don't need this counting here. Okay, just select this first. Okay. So now you can see if you can enable this option, so this will also gives you the calculation of your vertex as well if you want, right? So this is not the concern. Concern is you know how to extract the shadow. So like in this case, well यहाँ पे एक और चीज है, स्मूथ कैसे करना है पॉइंट्स को, दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, तो लाइक उसके लिए एक तो हैंडल तो है ही आपके पास, आप हैंडल पकड़ के चीजों को यू नो कर्व कर सकते हो, स्मूथ कर सकते हो. दूसरा कई बार ऐसा होगा गाइस कि आप जो सिलेक्ट कर रहे हो ना जो पॉइंट, उसके हैंडल्स नहीं दिखाएगा, कई बार ऐसा भी हो सकता है. ओके, सो वेल इन दैट केस अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो हियर वी हैव समथिंग कॉल्ड what is this cusp speed pager. ओके, तो आप इसको जब यूज करोगे ना तो ये आपको हैंडल दिखाना स्टार्ट कर देगा बेसिकली. और यहाँ पे अगर आप किसी भी पॉइंट को सिलेक्ट किए हुए हो ना तो इट्स लाइक आप जब Z दबाते हो ना, Z इज द शॉर्टकट. सो नाउ यू कैन सी वो ऑलरेडी स्मूथ होता चला जाता है. मैं जितनी बार Z दबाऊंगा ना उतनी बार वो स्मूथ होता जाएगा. आप जरा ये 0 नंबर का जो मेरा वर्टेक्स है उस पे जरा ध्यान देना, मैंने सिलेक्ट किया हुआ है और मैं Z यहाँ पे दबा रहा हूँ. सो नाउ यू कैन सी उसके साथ क्या हो रहा है. कैन यू सी दिस? हेलो पीपल. Okay, so it's like you know this is the something shortcut. You know आप किसी भी पॉइंट को कर्व करना चाहते हो, स्मूथ करना चाहते हो तो वहाँ पे यूज कर सकते हो. दूसरा फेदर इनेबल करने का एक दूसरा ऑप्शन यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा कि अगर फेदर के लिए जाना है तो डेफिनेटली आप किसी भी पॉइंट को यहाँ पे ऐसे पकड़ो, सिलेक्ट करो और फिर यहाँ से कंट्रोल को होल्ड करके रखो, कंट्रोल बटन को दबा करके रखो और ऐसे ड्रैग करो. तो जैसे आप ड्रैग करोगे ना तो देखो उसकी फेदर की जो लाइन है वो वहाँ पे इनेबल हो जाएगी. यू कैन सी दिस what I'm doing here. So I just press control and I'll start dragging this. Okay, so now you can see ये feather के साथ ये चीज यहाँ पे इस टाइप से आ जाएगा. Look at this. So like जैसे वहाँ पे व्हील टायर का जो कॉन्टैक्ट शैडो मुझे बनाना है उसके लिए I'll use it. तो यहाँ पे एक डॉटेड सी लाइन दिखेगी, तो ये आपकी मेन मास्क की लाइन है रेड वाली. ओके, और जो डॉटेड लाइन है वो मेरी फेदर की लाइन है. सो जस्ट कंट्रोल प्रेस करना है, कंट्रोल प्रेस करके ड्रैग करना. आप देखोगे कि जो आपकी मास्क की लाइन है, ठीक है, वो दो पार्ट में इस टाइप से ब्रेक होते हुए दिखेगी आपको, राइट? ओके ओके, टू मेक योर vertex smooth you can use something called Z. select your vertex and hit Z. okay, so tangents आपके रीसेट हो जाते हैं, चीजें स्मूथ हो जाती हैं, right? so this is how you can enable the mask feather inside your mask, right? और आपको जहाँ पे भी रिक्वायर्ड है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे थोड़ा सा रिक्वायर्ड, सो आई विल जस्ट ड्रैग इट. लुक एट दिस, राइट? तो यहाँ पे भी हम लोग इसका कॉन्टेक्स्ट शैडो थोड़ा ऐसे बना दें, राइट? तो डेफिनेटली इस टाइप से ड्रैग कर दिया तो ये फेदर यहाँ पे. तो ये जो रोबो के टाइम पे इसका जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं उसका पर्पस यही है ताकि हम वहाँ पे यू नो मोशन ब्लर जैसी कि अगर कोई चीज एग्जिस्ट कर रही है हमारे सीन के अंदर तो हम उसको निकाल सकें. ठीक है, सो आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. इज इट ओके? तो स्टार्टिंग में मैं क्या चाहूंगा गाइस कि आप लोग ना इस टाइप से 2-4 इमेजेस लोगे और एक सीन क्रिएट करने की कोशिश करोगे, उसमें 4-5 ऑब्जेक्ट को इस टाइप से मार्क्स करके इंसर्ट करोगे, ठीक है, और फिर मुझे दिखाओगे कि हाँ भाई ये हमने मैनिपुलेट किया हुआ है. तो इसके अंदर मैंने दो ही चीज का एडिशन किया एंड यू कैन सी द क्वालिटी ऑफ एज इन मास्किंग. लुक एट दिस. तो लाइक ये जो चीज है ना ये काफी बेहतर है. यू कैन सी
तो अभी तक आपने जितने भी सॉफ्टवेयर में लाइक फोटोशॉप में पेंट टूल यूज किया होगा या आफ्टर इफेक्ट में पेंट टूल यूज किया होगा, तो उसकी कंपैरेटिवली यहाँ पे चीज बहुत ही सुपर मिलने वाली है। तो जिन लोगों ने ट्राई किया है दैट्स वेल एंड गुड, और जिन लोगों ने नहीं किया आई सजेस्ट यू जस्ट गो थ्रू इट। ये अपने आप में एक बहुत ही बढ़िया चीज है, आप एंजॉय करोगे, ठीक है। देन रेस्ट ऑफ द थिंग इज इन फ्रंट ऑफ यू कि किस टाइप से एजेस हमारे दिखते हैं, ठीक है। तो आपकी इमेज की क्वालिटी ठीक होगी तो डेफिनेटली चीजें ठीक ही दिखेंगी, खराब दिखने का कोई सेंस वहां पे नहीं है। नेक्स्ट अगर मैं यहाँ पे कुछ और भी मास्क करना चाहूँ, तो जैसे मैं चाहता हूँ ये जो साइड की बिल्डिंग है मैं इसको रिप्लेस करना चाहता हूँ एक नए सीन से, तो डेफिनेटली मैं इसको भी मास्क करके यहाँ पे हटा सकता हूँ और कुछ नया प्लेस कर सकता हूँ। तो मैंने वो चीज़ ऑलरेडी यहाँ पे किया हुआ है, आपको मैं दिखा देता हूँ। So with this, so look at this. So this is what I have placed. This is my paint. No, look. So this is the actual scenario. You can see in this case. So I've taken this. Look. So I've just added this much of thing. Yeah. Right. This one. Right. Okay. तो अब चाहो तो ये पूरा का पूरा यहाँ पे रिप्लेस कर सकते हो। एंड द नेक्स्ट आई विल मास्क दिस एरिया, यू कैन सी दिस एरिया, ओके। सो आई प्लेस्ड अ न्यू इमेज हियर, ओके। आई थिंक so this is how it looks like, the final one, right? Okay, so I hope you guys can compare it with the original. So I'm just okay, so you can compare it here, guys. This is like the original one, and this is what I have done, right? So I just replaced this inside almost, okay. And if you can see my image, okay, I'll just make it zoom, and you can check it out, right? You didn't find any sharp edge or it's like cut paste कहीं आपको दिख रहा होगा। You can see यहाँ पे मेरी मास्क की लाइन exist कर रही है, okay, but you can see that everything has been settled. Look at this. This is my mask line. I'll just disable this. Now you can see nothing will be there. कुछ भी वहां पे ऐसा नहीं है जो आपको अटपटा सा लगने वाला, right? So this is the power of roto and roto line in new. So this is amazing. This is amazing, and this is how it's having huge demand in industry for rotoscopy or something for the masking. It gives the fabulous result specifically in terms of ages, okay. सर विंडशील्ड पे कैसे करोगे? Sorry, who's this? I didn't hear you, बेटा, नहीं सुन पाया सर आपको। विंडशील्ड पे कैसे करोगे? क्या करेंगे कैसे? रोटो जैसे आप न्यू खोलोगे एक बार। संचित प्लीज रिपीट योर क्वेश्चन। सर आवाज आ रही है? हाँ बोलिए। सर विंडशील्ड पे रोटो कैसे करेंगे? विंड शील्ड पे? यस सर। व्हाट इज दैट विंड शील्ड? सर जो सामने मिरर लगा हुआ है कार के, यहाँ पे? यस सर, ये पोर्शन। आई एम सो सॉरी अगर मेरे से मिस हो गया हो तो इस केस में, बट मैंने यहाँ पे ना शायद इसको मिस नहीं किया है। यू कैन सी आई हैव कैप्चर्ड दिस। सर वो नहीं बोल रहे, वो बोल रहे ना कि जो पीछे है सामने का। शीशा ये अंदर कार का ट्रांसपेरेंट, तो पीछे गाड़ी दिखती है आपको। ओके। तो ये जो पार्ट है लाइक इसको जो हटाना है, दिस हैज बीन डन बाय द क्लोन, ओके। ये हम लोग क्लोन करके इसको हटाएंगे क्योंकि पीछे फिर ये वाला सीन हमारा दिखना चाहिए, राइट? दिस इज व्हाट यू आर आस्किंग। Yes sir. Yes. For that we have clone tool, or this is like the basic exercise to understand the node roto and roto paint. अभी हम लोग पेंट पे गए नहीं है, तो लाइक नेक्स्ट सेशन हम लोग रोटो पेंट की बात करने वाले हैं।
वी आर गोइंग टू एक्सप्लोर इट, सो डोंट वरी अबाउट इट। तो वहां से अगर हमें रोटोपेंट का इस्तेमाल करेंगे तो डेफिनेटली इसको हम लोग क्लिक करके पीछे का सीन यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं, ठीक है। एक प्लेट बना के हम वहां पे पीछे डाल सकते हैं, ठीक है। We'll talk about it, but the first exercise you need to do this much, okay? And like in the next session, I'm expecting some work from you guys, okay? Like आप दो सेशंस मैंने आप लोगों को दिखा दिए बेसिकली, ये दूसरा टॉपिक एक्सरसाइज में आप लोगों को दिखा रहा हूँ। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग भी कुछ करें और मुझे शेयर करें। आप चाहे तो ग्रुप में शेयर कर सकते हो, आप चाहो तो इंडिविजुअल शेयर कर सकते हो। Like if you are facing any problem, feel free to ask me. Okay, that's all from for today from my side. Okay, I hope it will be clear to all of you. किसी को कोई यहाँ तक डाउट नहीं होगा, ठीक है। और हम लोग कल मिलते हैं, ठीक है। Which video you are talking about, Akas? Yes. I'll put the link in group. Okay. I'll. Beta actually having back-to-back batches. Give me some time. I'll drop it as soon as possible. Okay. Okay. Thank you guys. Yeah.